Hello. Okay. Can you guys all hear me? पीछे तक? Yes? Awesome. Assalamualaikum everyone. Welcome to DevFest. Thank you for the kind introduction and ramping up the whole crowd for me. I have come from Islamabad. आज सुबह बैठ के Fortunately fog ने मुझे नहीं रोका. I think बारिश हो गई थी वहाँ पे तो fog थोड़ी सी बेहतर थी. I today will be talking about the big topic of the day, AI. I'm not going to be talking about that. I will, however, talk about आप Gemini को use किस तरह से कर सकते हैं, right? So that's going to be one of the things we'll be sharing today. But before we do that, I want to understand कि हमारे hall में कैसे लोग हैं. तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो software engineers हैं? All right, a lot of you guys. How many people here are completely non-technical? Oh, very few. Not bad. और यहाँ पे कितने लोग हैं जो अच्छी तरह LLMs को समझते हैं? All right, very few. Excellent. So what I want to do today is I want to start off by giving you guys an introduction. एक introduction आपको अरसलान ने सुबह दे दिया है. I will be kind of building on top of that कि LLMs के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, and how do we go about using them effectively. यूज तो हम सारे करते हैं. आज सुबह देख लिया था चैट जीपीटी सब ने हाथ खड़े किए थे. बट डू वी यूज देम इफेक्टिवली? विल सी टुडे. आई होप यू विल हैव some things, new things that you learn today. All right. Oh, sorry. इसको ऑन भी करना होता है. Sorry. All right. So जैसे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम मशहूद है. आई वर्क एट दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तालीमाबाद. यहाँ पे कितने लोगों ने तालीमाबाद का नाम सुना है? Anybody's heard? Oh, quite a few people. Very nice. So तालीमाबाद is a company that is an edtech startup, and हमारा एक मिशन है, that is how do we improve the education, the state of education in Pakistan, right? ये किसी तरह से भी हो सकता है. हम लोग स्कूल्स के साथ भी कर सकते हैं, टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. तालीमाबाद हैज़ अ प्रीटी लॉन्ग हिस्ट्री. पिछले 6-7 सालों से एजुकेशन के अंदर हैं, डिफरेंट कंटेंट बना रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं. हमारे नेशनल टेलीविजन में भी चीज़ें चल रही होती हैं, व्हाट नॉट. बट दैट्स ऑल बोरिंग स्टफ. लास्ट ईयर व्हेन ChatGPT was released, I was working at a startup called Sasta Ticket. And when I saw ChatGPT, I was like, man, this will change, revolutionize how we do education today, right? एंड फिर मैं जाके पूरे लैंडस्केप में पाकिस्तान में जाके मैंने हर स्टार्टअप से बात की. मैंने कहा यार आप लोग एडटेक करें, हाउ आर यू गाइस प्लानिंग टू यूज दिस? एंड देन तालीमाबाद वाज द कंपनी वेयर आई सेटल्ड इन बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि दीज गाइज आर द मोस्ट पैशनेट अबाउट यूजिंग AI एंड डिप्लॉइंग इट इन प्रोडक्शन. नाउ what is so cool about AI in the education space? So the fundamental problem in AI in the world is कि हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, राइट? सारे बच्चों ने पढ़ना है, बट वी डोंट हैव इनफ गुड टीचर्स. बट यू नो व्हाट वी हैव इनफ ऑफ? अ ट्यूटर, एन AI tutor, right? Every child can have an AI tutor. And what's even better, every child can have a tutor that is customized to them. हम लोग जब स्कूलों में बैठते हैं ना, क्लासों में बैठते हैं, एंड आप लोगों को याद होगा 30 बच्चों की 20 बच्चों की क्लास होती है. टीचर इंडिविजुअल अटेंशन सबको नहीं दे सकती, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल. देयर आर नॉट इनफ टीचर्स. बट विद AI दिस शिफ्ट हैज स्टार्टेड हैपनिंग. ये जो पीछे मेरे वीडियो प्ले हो रही है, दिस इज आवर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग AI जनरेटेड कंटेंट यूजिंग जनरेटिव AI, राइट? ये पूरी वीडियो जो है ना, ये एक प्रॉम्प्ट से बनी है. लाइक लिटरली हम लोग इसको SLO बताते हैं, कहते हैं यार ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ग्रेड 4 में पढ़ाना है बच्चों को, इसके लिए एक मुझे वीडियो बना के दो. This particular video is actually not even made for students, it's made for teachers. हमें teachers को अभी train करना है कि how can they learn better, how can they show things better so that बच्चों को अच्छी तरह समझ आए, right? तो but you can do the same thing for students and customized learning, right? आप उस बच्चे को देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस बच्चे को कि यार उस बच्चे को शौक है डायनासोर्स का. अगर मैंने उसको कोई चीज़ समझानी है, मैंने मैथ्स में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मैं डायनासोर से ज़्यादा करूँगा, वो ज़्यादा दिलचस्पी लेगा उसमें, राइट? सो वी आर ऑलरेडी थिंकिंग इन दोज लेवल्स. हम लोग ने पूरी किताबें AI से जनरेट करवाई हैं, लाइक लिटरली पूरा करिकुलम प्राइमरी का AI से जनरेट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डन, राइट? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? यार किताब तो ये भी किताब है, वो किताब है. एंड में वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग कस्टमाइज्ड बुक्स फॉर ईच चाइल्ड. कि आपके बच्चे के हिसाब से, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके शौक के हिसाब से, अगर वो मैथ्स में अच्छा है
तो हम लोग मैथ्स में एडवांस लेवल ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वो इंग्लिश में अच्छा है तो इंग्लिश में एडवांस लेवल में ले जाएंगे। मैथ्स में कमजोर है तो वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन द फंडामेंटल्स सो दैट ही लर्न्स बेटर, ही हैज अ बेटर बेस, राइट? So all of this is a huge shift in the industry that's coming in. And this is why I've been really, really excited about working with AI and sharing some of the things that we're using there today and helping build all of this. तो ChatGPT का तो सब लोगों ने बता दिया था। यहाँ पे Bard लोग कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? All right, awesome. Everyone's using Bard. So now आप Bard use करें, ChatGPT use करें. There are many others as well. I think all of the important thing is that we should be using this technology today, right? We should be using this technology so that we can get better output, so that we can be more productive, right? अगर ये हो रहा है, that's great. If this is not happening, then we need to self-reflect कि कहाँ पे हम लोग इसको सही तरह से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, जिसकी वजह से we're not able to get the complete output from it, right? So we'll start with first understanding what is this generative AI. Again, this is an extension of the talk from the morning. We'll go into a slightly different kind of detail. We're going to take it apart and look at the specific things that are inside of AI. Magar, why do we need this, right? मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे फायदा क्या होता है? And it's like driving a car, right? आप सब लोग यहाँ पे ड्राइव करते होंगे, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, but अगर आपको उसका इंजन किस तरह काम करता है नहीं पता, that's not a problem. LLM is like an engine, वो काम कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. मगर अगर आपको पता है इंजन कैसे काम कर रहा है, तो you can drive better, right? You can have better sense of what works and what doesn't work, right? उसकी जो खामियां हैं वो क्या हैं, उसकी limitations क्या हैं, all of those things, right? So this is my attempt to share few of those fundamentals जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, and then you can actually go around and start tweaking the settings and play around with these things so that जो आप लोगों के use cases हैं, जहाँ पे आप लोग अभी ChatGPT को use करें, उनको शायद आप थोड़ा सा customize करना शुरू करें, उनको specific करना शुरू करें. So that's the purpose of this workshop. कौन मुझे बता सकता है ये क्या चीज़ है? Neural network. Very good. This is not a new invention, right? 20 साल पहले ये invent कर लिया था, शायद उससे पहले भी invent हुआ हुआ है. But the principle here is very simple. किसी को ये ख्याल आया कि मैंने अगर एक मशीन से काम करवाना है, why can't we do it the same way the humans do? हमारे दिमाग किस तरह से काम करता है, उस तरह का कोई algorithm बनाते हैं, right? So at its simplest form, this is a neural network that is mirrored to how our brain behaves. तो a neural net is very simple. हम लोग एक input लेते हैं यहाँ से, and then it passes through these nodes, और वो फिर एक specific output के ऊपर train होता है, right? And this is pre-training. This is an important concept that we'll be revisiting again. हर node के ऊपर there is something called a weight, right? And हम लोग parameters की बात करते हैं LLMs में. We'll come to that again later on as well. So keep that in mind. तो जो weights हैं, the weights will be changing according to the inputs and outputs. And this is a process that happens automatically over time. And when we have the desired outputs, तो वो weights हम लोग store कर लेते हैं और उनको फिर different algorithms में use करते हैं. How does that look like? This example, by the way, is something I did back in 2012, right? This is over 10 years old. None of this is new. What was new is, almost new, was what the title of your first talk was. All you need is attention. That is a relatively new paper, 2017 ka. But all of this stuff is pretty old, but fundamental. This is how the LLMs work. So we have, what is this? What are we trying to do over here? ये क्या कर रहा है ये example? Sorry? OCR, Optical Character Recognition, right? यहाँ पे कितने लोगों ने OCR किया है कभी? Right? A lot of you guys. We do a lot of OCR, right? तालीमाबाद में हम लोग सारी किताबों के OCRs बैठ के करते हैं so that we understand कि टीचर ने actually पढ़ाना क्या है और उसके हिसाब से उसका content बना सकें. So OCR is a very fundamental thing. You could almost say it's a solved problem, right? ये तो काफ़ी सालों पहले solve हो चुकी थी. हमारे पास APIs थे. But उसका fundamental solve किसने किया था? So we have a grid, we have an image over here जिसको हम लोगों ने pixels में divide किया हुआ है. A pixel can be 1 and zeros, right? अगर वो खाली है तो 0 है, अगर वो
filled है तो 1 है, and it's passing through this neural net. What is this neural net? यहाँ पे लिखा हुआ है ये 255 boxes हैं और ये 255 input neurons हैं, सब लोगों के ऊपर 0 and 1 है, ठीक है? That's it, very simple. अब मैं इसको ट्रेन करूंगा, मैं इसको प्री ट्रेन करूंगा with I don't know 10,000 100,000 images. मैं इसको बताऊंगा यार ये देखो ये A है, ये A है, वो आएगा इसका टर करके, जब भी वो A आएगा ना वो चेक करेगा अच्छा यार मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स रखे हुए हैं, मैं अपने पास उनकी वेटेज उसको सेट कर लेता हूँ. It will do that for A, for B, for C, and what will happen over here is what we call it learns the patterns, right? कि जब मैं एक अल्फाबेट लिखना सीखता हूँ या रिकग्नाइज करना सीखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार अगर ये वाले पिक्सेल्स में इंफॉर्मेशन है तो उसका मतलब क्या होगा, A होगा. अगर नहीं है, अगर थोड़ा डिफरेंट है तो वो B होगा, C होगा, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर ब्रेन्स आर लर्निंग एंड दे हैव रेप्लिकेटेड दिस इनसाइड ऑफ एन LLM. But our brains are not always 100% accurate, right? How many people here think that this is number 6? जो यहाँ पे image और number 6 की है, right? 50%. How many people think this is number 9? 50%. So this is your brain. This could be an LLM, right? बंदा देख रहा है, neural net देख रहा है, वो कह रहा है यार ये 6 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है. Probabilities हैं. It's a game of probability. Right now it's 50-50, right? Now you can't see this, but यहाँ इस image में ना actually एक हल्का सा white सा लिखा हुआ है background में, जिसके अंदर you can see that जो right way है वो actually number 6 है, right? तो when I give it some additional context, मैंने आप लोगों को ये information दे दी है कि यहाँ पे कुछ text लिखा हुआ है और वो यहाँ पे straight सीधे नंबर तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो text लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है. Using that context, you will know कि यार ये image जो है वो 6 की है, right? So context is very important. And what will happen? What will happen is कि आपकी probability increase हो गई. पहले 50% थी, you weren't sure, but now it's at 99%. कि हाँ यार, I'm now 99% sure कि ये 6 ही है. कुछ और भी फिर भी हो सकता है, right? Maybe ये शायद scribbling थी गलती से. क्या हमें नहीं पता, हमें additional context चाहिए उसके लिए. But at least with the information that we have right now, this is what we can make of our LLMs. तो let's come down to the LLM world now. कि LLMs में हो क्या रहा है, ये मशीन करती क्या है? What is this machine? क्या ये मशीन मुझे सवालों का जवाब देती है? No. That is not what it is originally designed for. The best example that I've gotten is that your LLM is a fancy autocomplete, right? यहाँ पे कितने लोगों ने अपने फोन पे autocomplete यूज किया है, right? सब लोगों ने यूज किया है, बड़े मजे ट करके हम लोग करते हैं, आधा आधा लिखते हैं, गंदा गंदा लिखते हैं, autocomplete सारा कुछ सही करता रहता है, right? How does it do it? What is it doing? It's just trying to predict either your current word or the next word that you're going to be using, right? That's it. A foundational LLM is doing just that. It does not know anything more than this. हम उसको कुछ context देते हैं, which is over here, it's raining cats, and वो जाके अपने corpus में check करता है कि what is the most probable thing that can happen. In this case, dogs has the highest probability. And this is a very, very important concept. It's all based on probability, right? कि यहाँ पे 99% 99% हो सकता है, 100% is probably not possible, right? Because it's all probability. यहाँ पे बहुत clear है probability, यहाँ पे 0.9 है, 0.03 है. But it may not be the case every time. So, which is why we get different outputs whenever we prompt the same thing, right? Because वो continuously probabilities change हो रही हैं, and the model is learning and model is shifting as it goes along. But keep in mind these probabilities because we'll come back to them in a few minutes. So one cool thing that Arslan said, I don't know how many picked up on it, was that LLMs is a compression of the internet, right? And उन्होंने दिखाया था दो फाइलें थी, right? 140 GB की फाइल थी और एक C फाइल थी. तो हो ये रहा है लॉसी कंप्रेशन, पूरा इंटरनेट उठा के 140 GB के अंदर डाल दिया है. अब वो ऑफलाइन अगर मैं रन कर रहा हूँ, मैं से जो भी सवाल पूछ रहा हूँ इंटरनेट के बारे में, वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बारे में, राइट? सो दैट्स अ कंप्रेशन. वो प्रॉम्प्ट जो था ना मैंने
मैंने जाके ये इमेजिन 2 जो है ना गूगल का एक इमेज जनरेशन एआई है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जरा ये विजुलाइज करो कि what does compressing the internet look like, and this was something it returned, and I think like I felt this was very beautiful because the way it did it was very, very precise. This was something that I was looking for, and it just came out very nice, so I thought I'd share with everyone over here. So LLMs, अब हमें समझ आ गई थोड़ा सा, right? कि LLMs का जो मकसद होता है that is कि हम लोग को वो next word predict कर सके. मगर जो हमारे नॉर्मल LLMs हैं, जो फाइन ट्यून्ड LLMs हैं जो हम यूज करते हैं, ChatGPT, Bard वगैरह, दे आर बेसिकली मॉडल्स दैट विल आंसर योर क्वेश्चन. आप उसको कुछ चीजें देंगे एंड दे विल आंसर योर क्वेश्चन. सो दैट थिंग, दैट इनपुट दैट वी गिव देम इज कॉल्ड ए प्रॉम्प्ट. नाउ हमने अगेन, अरसलान ने थोड़ा सा मैं यहाँ पे काम कर दिया है कि नॉट ऑल प्रॉम्प्ट्स आर द सेम, राइट? कि आपने अगर एक एवरेज सा प्रॉम्प्ट लिखा तो शायद आपको एक एवरेज सा रिस्पॉन्स मिलेगा. आपको अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. एंड समटाइम्स यू वोंट गेट अ रिस्पॉन्स क्योंकि जिस तरह से आपने उसको प्रॉम्प्ट किया है वो LLM उस तरह से सोच ही नहीं रहा, राइट? सो अगेन this is just a high level thing, but we will go a lot deeper into details about prompts and their engineering. Okay, how do you kind of make good prompts when you're thinking about asking questions? And through that, you can have a much better output coming from the LLM. But before we get there, there's a long journey. There's a lot of other stuff we need to think about. The first one over here is tokens, right? So tokens जो हैं हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब हम लोग ChatGPT या Bard से बात कर रहे होते हैं तो जो प्राइसिंग होती है वो टोकन्स के अंदर चार्ज कर रहे होते हैं, राइट? कि 1000 टोकन के ऊपर $0.01 पे चार्ज कर रहे हैं उसको. तो ये टोकन्स होते क्या हैं, राइट? टोकन्स जो हैं बेसिकली वो किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी डेटा को एक छोटे से टुकड़े में ब्रेक करते हैं और उसको एज ए इनपुट देते हैं LLM को, राइट? तो सवाल ये है कि अगर इनपुट देना ही है तो इंग्लिश का करेक्टर दे दें. ये इंफॉर्मेशन को तोड़ के टोकन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? एनी आइडियाज क्यों कर सकते हैं ये? यू गेट द बेस्ट एक्यूरेसी. इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. जब मैं इंग्लिश का वर्ड दूंगा और फिर मैं से उर्दू का वर्ड देता हूं और फिर मैं शायद किसी और लैंग्वेज में वर्ड देता हूं, वो सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं, कैरेक्टर्स भी डिफरेंट हैं. But when I convert them into tokens, I have a single medium of instruction. And what's more, what about words? Characters को side पे करें. What about audio? What about video? What about images, right? These are all different forms of data that we're using today. And tokenization basically allows me to convert them into a form that is medium, right? तो हम लोग अभी बात करेंगे multimodality की, that this is where it stems from. The fact that we have an input that is not your English language. It is just an input that is being converted into a intermediary state. तो यहाँ पे अभी जो Bard यूज करता है उसमें वो 4 कैरेक्टर्स को उठाते हैं, इसका एक चंक उठाता है और उसको वो एक टोकन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? And that is how it's measuring input and output for us. And we'll see where we can see the number of tokens as well. This is very important for one of the next things that we'll be talking about. Parameters, right? तो हमने सुबह को देखा है देयर इज अ मॉडल. कौन से मॉडल के बारे में बात हो रही थी सुबह को? लामा 2 के बारे में बात हो रही थी. एंड लामा 2 इज, उसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल, गोज ऑल द वे अप टू अ 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल. एंड यू कैन सी some stuff over here. I'm not sure how visible the numbers are, but the stuff like Palm was 540 billion parameters, right? अब ये parameters हैं क्या? What are these parameters? करना क्या चाह रहे हैं ये parameters के साथ? So हम लोगों ने बात की थी पिछली न्यूरल नेट्स के अंदर, राइट? न्यूरल नेट्स में आपने देखा था कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के ऊपर क्या लगते हैं? वेट्स लगते हैं, राइट? The number of parameters is basically the number of weights that model uses, right? तो इसलिए जब सुबह अरसलान ने कहा था कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे उतना आपका AI इंटेलिजेंट होता जाएगा. बेसिकली वो न्यूरॉन्स बढ़ा रहे हैं हम लोग, दिमाग को बड़ा करते जा रहे हैं और it can process more intricate information, right? But that said,
अभी तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इसका, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये हमेशा नहीं होता रहेगा. एट सम पॉइंट मॉडल्स इतने बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे देखें ना 540 बिलियन पे तो पहुंच चुके हैं हम पाम के साथ, तो इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर शायद आप उसमें अगर 100 बिलियन और डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट pertains to everything that we do. So this is all about parameters, something very important to understand. Next one is context window, right? कि हमारे पास जो फोकस था पेपर का, जो आज टाइटल था जिसका, attention is all you need, right? So where does that come from? उसका मकसद क्या है उस पेपर का? So up till before this paper came along, we would take a sentence और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे होते थे, राइट? द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग जिस तरह से उस सेंटेंस को देख रहे थे वो थोड़ा डिफरेंट था. अटेंशन ऑल यू नीड का जो पेपर था ना, उसका पूरा थीसिस जो था वो सिर्फ इस तरह से डायरेक्ट कर रहा था कि कौन से वर्ड्स पे, कौन से टोकन्स पे फोकस होना चाहिए, राइट? एंड दैट इज व्हाट एसेंशियली चेंज्ड द होल इंडस्ट्री. दैट इज व्हाट चेंज्ड द LLMs बेसिकली फॉर द बेस्ट. नाउ व्हाई इज कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं देता हूं LLM को तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं. उसको नहीं समझ आ रही अगर आपको उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, राइट? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास. जब मैं एक लेट्स से एक एक्सरसाइज बनाने जा रहा हूं एक बच्चे के लिए, राइट? एक स्कूल का बच्चा है, एक 5th ग्रेड का बच्चा है, राइट? नाउ आई हैव टू प्रोवाइड इट द कॉन्टेक्स्ट. आई हैव टू प्रोवाइड इट इंफॉर्मेशन लाइक वो कौन से ग्रेड के लिए है, वो कौन से सब्जेक्ट के लिए है, वो किस तरह का टॉपिक पढ़ रहा है. ऑल ऑफ दिस इज रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट. मैं अगर चाहूंगा ना तो मैं कहूंगा कि मुझे अर्थ स्ट्रक्चर का एक क्विज बना दो, वो मुझे बना देगा, राइट? नॉट अ प्रॉब्लम. इट कैन डू दैट इन अ वेरी इजी लाइन. बट द मोर कॉन्टेक्स्ट आई प्रोवाइड एंड व्हाट वी डू इज, हम कहते हैं कि यार सब कुछ छोड़ो, जो चैप्टर पढ़ा है ना उसने किताब में, एक्चुअल किताब में जो उसने चैप्टर पढ़ा है उसका भी टेक्स्ट साथ दे दो. सो द LLM नोज कि उसने ये टेक्स्ट पढ़ा है अभी और ये एक्सरसाइज की हैं. नाउ इसकी बेसिस पे हम एक क्विज जनरेट करने जा रहे हैं, राइट? सो इट इज नॉट ओनली वेरी वेरी रेलिवेंट टू हिम, इट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज यूजफुल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे जो बोर्ड सिस्टम है उसमें जो है एग्जाम बुक से ही आता है, राइट? देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम लोग ट्रेन करें बच्चों को बेसिकली असेसमेंट्स के लिए, दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट टू देयर कॉन्टेक्स्ट. So this is what a context window looks like. Now, what is the problem with context windows? आपने देखा होगा कि अभी जो बार्ड आया है उसकी जो context window है that is 12,000 tokens. बहुत शोर मचा था चार्ट GPT-4 के टर्बो के अंदर 100,000 plus context window, right? Why is this important? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग let's say मैंने एक किताब का पूरा चैप्टर डाल दिया है तो उसमें कितने सारे सैकड़ों टोकन्स होंगे, right? And if my context keeps getting bigger and bigger, then what happens? I ran out of memory, right? So I can only have a limit. This is the memory space of my LLM. कि कितनी उसकी कितना याद रख सकता है वो. So this is going to vary from model to model. So again, when you're looking at a model, when you're using something, you will look at कि उसकी context window क्या है. And also understand कि a larger context is not always useful. क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा context दे दूंगा तो again my quality might start decreasing, right? Because that is maybe over information. मैंने एक चैप्टर का क्विज बनाना है, मैंने उसको पूरी किताब दे दी है. अब वो obviously LLM क्या करेगा, वो शायद किताब के किसी और चैप्टर से भी क्विज बना दे, right? Questions उठा ले. So that's not optimal for me. So we have to be very careful about the context that we're setting for the LLM. The next one I want to talk about is temperature. And temperature is basically how you want to manage the probabilities, right? हमें understanding हो गई है कि LLMs जो हैं वो output side probabilities पे देते हैं. So the temperature allows you to kind of vary the probabilities that we have within the model. तो अगर मैं उसको this is usually a number 0 to 1. तो अगर मैं इसको 0 की तरफ ले जाऊंगा या सॉरी 1 की तरफ ले जाता हूँ तो वो लेस रैंडम हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, जो सवाल पूछा उसी का जवाब देगा. और अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो वो कम छोटी वाली प्रोबेबिलिटीज उठाएगा, राइट? और उससे मेरा आंसर क्या होगा, रैंडम हो जाएगा. तो हमने देखा था पहली वाली स्क्रीन में वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो थी वो डॉग की थी, बट मे बी वो जैसी प्रोबेबिलिटीज कम होती जाती हैं तो शायद वो वाटर सेलेक्ट कर लेता, राइट? एंड दैट विल गिव मी अ मोर क्रिएटिव आउटपुट. तो डिपेंडिंग ऑन योर टास्क, इफ यू आर अ मार्केटिंग पर्सन जनरेटिंग सम मार्केटिंग कंटेंट, आपको मोर रैंडम चाहिए, राइट? सो दैट यू कैन गेट सम रियली कूल आइडियाज. बिल्कुल रैंडम आइडियाज हो, बेशक गार्बेज हो, कोई बात नहीं, आई एम लुकिंग फॉर आइडियाज.
But when you're looking for an output, maybe when I'm making a quiz for a student, I mean very specific things. I don't want any creativity over there. मैंने जो आपको कहा है, आप उसको repeat करके देंगे मुझे, right? So that's a critical part of the LLMs that we're using today. So one important aspect, हमने पहले बात की थी, कि the LLM itself is just an autocomplete, right? It is not a system that is designed to answer questions. उससे हम लोग सवाल पूछ नहीं सकते. In order for that to happen, we actually have to take curated data sets and fine tune them, right? तो जो हमारे पास models आते हैं, ChatGPT, Bard, these are all fine tuned models. But when we talk about Llama 2, we get both variety of models. We get models that are foundational, जिसके जब मैं सवाल पूछूंगा, वो मुझे शायद जवाब नहीं देगा, वो मुझे उसके आगे वाला सवाल दे देगा. But we also get fine tuned models, and we can have a look at that in the slides after, कि वो और कौन सी variations हैं जो Llama 2 के foundational models को लेके fine tune कर रहे हैं. The different companies are already doing that for us. Multimodality is very important, right? Now our models are not only understanding text, they are understanding images, sound, and video. ChatGPT के अंदर it does that too, but ChatGPT transcribes your audio and then puts it into the system as text. Gemini uses the audio directly. So it can pick up on things like accents, it can pick up on things like emphasis, right? Same thing happens with videos. You can take a video, convert it into an image, and put it in. That's fine. But what if you could take the stream itself and put it in? And it has a different impact, right? So a lot of work is happening on multimodality. And what this allows us to do is, it allows us to have even more power than we had before, right? Okay, now we're not just taking a static input, we're talking, जब books हैं, books के अंदर you often have images and text. Now I can present both to the LLM and it can fully understand the context of the input that we're giving to it. यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने hallucination experience की है LLM model के साथ? Right? Raise your hands. बहुत कम लोग हैं. Interesting. So one thing that will happen eventually if you're using LLMs all the time is कि आपको एक दफ़ा LLM को जवाब देगा और आप वो and this happens like this has happened with me more than once. मैंने उससे एक API की integration का example मांगा और उसने कहा जी आप ये वाला endpoint use करें और ये API use करें, इस तरह से इस्तेमाल करें उसको. और जब मैं use करने शुरू किया ना तो उसने कहा कि यार वो कोड चल नहीं रहा था. मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या मसला है इसके अंदर. तो मुझे पता चला कि वो जो API endpoint उसने बनाया था वो fictional था, वो उसने खुद ही अपनी तरफ से create कर दिया था, right? उसने hallucinate किया, वो documentation में कहीं पे कहीं नहीं लिखा हुआ, but that was something that was hallucinated by the LLM. So we have to be very careful when working with this, and this is very especially important when we're working in education, because obviously we don't want to present facts to kids that are not true, right? कि सब लोग समझ रहे हो कि हाँ यार यहाँ पे XYZ चीज़ होती है जब वो होती ही नहीं है because the LLM thought वो exist करती है. So this is something we're always constantly checking for manually for now, but I think over the next few years, this is something that all the models will get very good at improving. So हमने अभी तक Bard और ChatGPT की बात की है, but जैसे सुबह बात हो रही थी, I think the world does not end over here, and it's very important for us to actually start using models that are outside that scope as well, क्योंकि different models behave differently. और आपके use case के लिए maybe it's a slightly different model that you need, right? So no matter what you're doing, even if you're writing code or if you're doing something else, it's worthwhile trying out a few models to see what sort of output you're getting from different models. तो जो एक चीज़ मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे ये दो models हैं हमारे पास, Wizard LLMs, ये Starling. These are all models that are using actually Llama 2's foundational model, right? तो हमें understand सुबह कुछ देखा था कि foundational model होते हैं जहाँ पे सारी compute लगती है, वो 12 दिन तक $2 million खर्च होते हैं, सारा कुछ होता है. But वो model बन जाता है ना, उसको fine tune करना होता है, which is a slightly incremental process. तो वो model foundational model लेते हैं, and then all of this innovation is happening open source, right? Anybody can go and download them and use them. तो हमारे पास giants हैं. We have the giants who are making the proprietary models. Some of them are very good, some of them are not so good, and they're getting there. We have the open source models, and it's good to kind of work with all of them today.
ये मैं आपको already share कर दिया है, foundational models and the fine-tuned models में difference क्या होता है, so you have to supervise them. And one thing I wanted to share here was कि normally when you start running these models, so एक जो challenge आता है is that you have a lot of one of the challenges that we run into is that we don't have the compute on our machines to run this, right? तो हम लोग कहते हैं यार ये models तो run ही नहीं कर सकता मैं तो फायदा क्या है? So almost every cloud platform, AWS, Google Cloud, Azure, now allow you to just click and deploy LLMs on the go, right? It's literally just coming over here, clicking on something and just starting it, and then you get an API that you can use to communicate with it. So it's very easy. But if you want to run it locally, then this is a really great tool. I'm not going to let you guys run it today, right now, because obviously जो सबसे छोटा model है वो भी शायद 7-8 GB का है, right? So that's going to probably take down the bandwidth. But using it is very easy, right? So depending on your platform of choice, you just have to go in and run a command, and it will download and start running that model for you. And it gives you a prompt, so you can put the prompt in and you can see how it's behaving. There's no API and stuff involved, which is usually a little bit complicated for most other setups that I've seen so far. If you start using it slightly more advanced, then I will always suggest checking out LangChain, because LangChain has a set of utilities that will help you kind of build your LLMs, your models on your machine with a lot ease. So that was all talk. That was also a lot boring. So now I want to give you guys a glimpse of, of what a AI Studio looks like, right? So Google AI Studio, the basic idea around this is that some of us are just using this for our own things. But when you come to building these AI products, we want to move fast, right? Dunya bahut tezi se change ho rahi hai. We can choose to kind of sit on the side and watch it all change, or we can do something about it. So what we want to do over here is we want to build really fast. Now there are many tools out there, and Google AI Studio is one of them. I want to share the 3 main features that are available over here, and they essentially allow you to build your base. So you're not building a product over here, but you're experimenting for building a product. So जब हम लोगों ने कोई, let's say, किताब का chapter लिखना है, या मैंने कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ generate करनी है, तो मैं पहले API नहीं लिखता, मैं code नहीं लिखता, I come over here, right? And this is my playground. This is where I start testing it out, where I start playing with it. And then over time, as I get better, then I start kind of building it up. So the first one I want to show is a free-form prompt, right? We are very familiar with this interface, right? We ask it questions, it gives us back answers. We can give it images, we can give it whatever, and it will kind of understand all of that and kind of give it back to me. So in this case, I've shared an image over here, and I've said, what do I need to make this salad? And it will give me the breakdown of all of the things that I need to make in the salad. Then I can go around asking it more questions. How do I kind of make the salad? And it will start kind of breaking it down for me, step-by-step process, right? This is, I hope all of you guys are already doing this. But I think things get interesting. Oh, my internet. Give me a second. All right. Right, almost there. So so that's the basic prompt model. Magar, what you want to do is you want to build something, right? You want to build something like a chatbot, or maybe something that gives you specific outputs for something, that generates outputs for something, right? The internet. All right. So this is where you can do something called multi-shot prompting, right? So when we talk about prompts, हमने बात की थी,
So we have to engineer prompts in a specific way so that they are more effective. How many people have heard the term zero-shot and multi-shot prompts? Raise your hands. Very, very few people, right? That's not good. अगर आप लोग ChatGPT इस्तेमाल कर रहे हैं, you have to understand prompt engineering. That's very important. So this thing allows you to kind of create the multi-shot prompt without doing any fancy structure to your prompts. आपका बड़ा simple example है, हम उसको पहले एक define करते हैं कि किस तरह behave करना है उसने, right? So you want to help define the structure कि LLM should behave in what manner, and then you will give it a series of inputs. यहाँ पे इस example के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट मार्केटिंग का मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें वो प्रोडक्ट मार्केटर्स के लिए ऑसम सी आउटपुट्स देगा, राइट? सो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि जी यूर टारगेटिंग जेन जी ऑडियंस, क्रिएट एक्साइटिंग एंड फ्रेश एडवर्टाइजिंग कॉपी, ब्ला 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 ब्ला, एंड उसके नीचे फिर मैंने उसको थोड़ा ट्रेन किया, राइट? दिस इज व्हाट्स कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग. So I've given it two examples. This is what's called a multi-shot prompt, right? If I don't give it any examples, it's called a zero-shot prompt. I've given it two examples. मैं कहूँगा अगर मुझे user मांगे ना कि उसने एक sticker का मुझे marketing output चाहिए, तो इस तरह का कुछ बना के देना. And the cool part is I can actually generate this from my free-form input, right? I mean, I don't have to write it myself. I can create this output myself. और फिर इसी तरह मैंने एक हुडी का दिया यहाँ पे. And now using this, what is this? This is context. This is context for the LLM. और जब मैं उसको ये context दे रहा हूँ कि यार मुझे इस style में output चाहिए, तो naturally जब मैं उसे नीचे आके test करूँगा, तो वो मुझे उस style में output भी देगा, right? And I can put in whatever I want over here, and it will give me the output for that. The last one is a chat prompt, right? And this is where things start getting really cool. Because what can happen is, इसको मैं refresh कर देता हूँ. So I have a prompt here that says, कि you are Tim, a friendly alien that lives on Europa, one of Jupiter's moons, right? अगर मुझे एक chatbot पहले बनाना होता था ना, I would have to define lots of different rules to control the information. I don't have to do that anymore. That's it. I just have to give it a prompt. और उसका पूरा एक character set हो गया. And now I can give it additional rules over here, right? I can give it some safeguard rules कि आपने इस तरह से जवाब देना है, उस तरह से जवाब देना है. And now when I go and ask it about it, now it has enough context to answer very specific things for me. तो मैं जब यहाँ पे पूछता हूँ ना उससे what's the, or let's start with a simple hi first, right? कि मैं एक user आता है वो कहता है hi, ये है क्या चीज़? ये prompt है, मैंने एक chart शुरू कर रहा हूँ, तो किसके साथ कर रहा हूँ? और वो आपको directly बताएगा सबसे पहले कि यार I am a friendly alien from Europa. तो अच्छा ठीक है, and what's the use case here? ये मैंने बड़ा अजीब सा example लिया. What's the use case here? ये in education this is magic, right? You have a child who is now interacting with an alien. That is so cool, right? वो एकदम से मैं उसको बैठ के जुपिटर के मून के बारे में 40 मिनट का सेशन दे सकता हूँ और वो बेचारा सो जाएगा क्लास में. But now he has the world to explore. And maybe he's going to ask, what is the weather like there, right? And I think the important thing again here to understand over here is कि मुझे again कोई boundary set नहीं की. मैंने नहीं उसको बताया कि उसने इसका weather भी बताना है, right? That is the context set by the LLM. It's fine-tuned, so it knows how to behave in this case. Because मैंने उसका initial context set किया है, उसके साथ ही सारा बन गया है, right? So this is super powerful. All right. So these are the 3 different ways of using Google AI Studio to test out your baseline. Once you've done that, then what you want to do is you want to take this into code, right? And the thing that I love about this is कि यहाँ पे आपको ना एक button नज़र आ रहा है, get code, and it will actually give you the code that you need
to implement this in your application today, right? It's literally just copy paste and it works. तो Python में है, आप Android पे हैं, उसमें हैं सारे यहाँ different platforms आ रहे हैं. You will have to generate an API key first. Obviously, you have to plug that in. तो API key का यहाँ पे setup होता है. And it's very easy, right? There's no major authentication required and whatnot. You can just take it and kind of integrate this into your application. I want to kind of wrap up the whole thing by talking about a very important thing that has come into play, right? यहाँ पे कितने लोगों ने RAG pipelines का नाम सुना है in context to LLMs? Not very many people. So one problem that we run into when we're playing with LLMs is कि उनको हमको periodically train करना होता है. हम हर रोज train नहीं कर सकते. क्यों? Why can't we train them every day? Cost is too high. It takes too long. 12 दिन तो लगते हैं उसको train करने में अभी, right? Llama 2 की बात करें, this is a small model. जो Google के models होंगे वो शायद एक 2 महीने चलते होंगे, right? So what's going to happen is कि at some point the information inside the LLM is going to get outdated. I want to work with the latest information, so how do I do that? And there's a whole focus on building these RAG pipelines for data that is not inside the LLM, that might be proprietary for you. आपके office का कुछ, आपकी company का कुछ data है, there's a knowledge base, there's information that you specifically have. In my particular case, it was the books that we were using, right? तो जो हम लोग books इस्तेमाल कर रहे थे, they are books that are not available on the web. And obviously, the local textbooks are हमारी पाकिस्तान की, वो they're not available on the web, so they're not part of the LLM model. So how do I give it that context? I can use a RAG pipeline to do that. तो उसके लिए there is a concept of an embedding, right? An embedding is basically taking what we have, the input. It could be an image, it could be audio, it could be text, and converting it into a representation for the LLM, right? It's a series of numbers. It's an array of numbers which we can then store separately and use that series of numbers later on. When we have an array of numbers, we call that a vector, right? ये हम लोग maths में पढ़ते हैं, physics में पढ़ते हैं, जब हमारे पास एक array of numbers होता है, हम उसको vector कहते हैं, and a vector can be stored in an x-dimensional plane, right? क्योंकि वो एक अपनी space create करता है उन n dimensions की, और उसके अंदर उन numbers को store कर रहा होता है. So, in this particular case, I have a few text sentences that I've converted into embeddings and I've stored in the database. और जब मैं उनकी 2D representation निकालता हूँ, so I can then see that there are clusters. The things that are similar are closer together in the mathematical space, in the number space. This allows me to actually find the relevant thing for myself using the LLMs, right? So basically, how does this look like? Very easy. I take some content. Embedding model will be something like a ChatGPT, whatever, a Bard. I will create vectors. I will throw them in the database. And then when I have a query, I will use the embedding model again and the database to find the relevant things that I want from that database, right? This is not hard. Like I said before, it's literally a few lines of code. We take the API key, we generate an embedding. We use some code to put it in the database, right? We're not doing anything fancy over here. Literally, जो actual code है वो शायद एक line का यहाँ पे है, vectors.append, and it puts it in the database. And then we query it. We simply ask for it. हमें कहता है यार ये index है, इसको मैं ये information के साथ query कर रहा हूँ, and it will find me the most relevant things from that database. So मेरी अपनी database बन जाती है, which allows me to query the information needed. Just to wrap things up, these are some of the resources that I think all of you will find helpful. The one at the end, I think, is one that is personally very useful. As of today, there is a new program launched called Cloud Seco, and that is a really good program initiated by Google for Pakistan.
I would recommend all of you checking those out. There's a lot of AI applications to be built in that as well. Yeah, I think that was it from my side. I think we can now move on to questions. All right, are we doing questions? Mike, for the questions. So a quick question. There are certain stages. Mike. Okay, sorry. Yeah. So a quick question. So there are certain stages where we are basically like putting the data in the LLMs and we are basically fine tuning it, right? Yes. So the GPT actually gets stuck to a certain stage where it repeats the data. So let's say, for example, I'm just going to give you an example. So I've created a GPT which is extracting data from like you can say random emails from the signatures. It is just like extracting contact details, phone numbers and emails, right? Sure. So what happened is like I provided the context that this is the email and this you have to extract the data, right? But after you can say 500, 1,000 examples, what happened is it stuck with the you can say signature part. So how to deal with those particular situations? So again, I think what you're talking about is a challenge with the prompt itself, right? Okay. So there comes a point where no matter what you change in the prompt, it doesn't give you the right output. So I don't know how to fix that particular case, but I think the whole idea is that it's best to explore the different kinds of prompts. So have you tried a chain of thought prompt so far? Sorry everyone. काइंडली बी सीटेड जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक और वर्कशॉप हो रही है. थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे. मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को सबको भूख लगी है, सबके सुबह से बैठे हैं. सॉरी मैं आप लोगों का क्वेश्चन काट रहा हूँ बट इट इज़ टू ऑडियंस के यार काइंडली बी सीटेड. अभी आपके वर्कशॉप है एक इसके फ़ौरन बाद, ठीक है? यू कैन कैरी ऑन. No worries. तो आप बताए थे, have you used a chain of thought prompt yet? हाँ, तो मैं advise करूँगा just look in those spaces, right? So there are many different ways of prompting, and I think if you change the way you prompt, it will probably give you a slightly different or better result. All right, any other questions? There's one over there. Do we have a mic? No, I think it's off. Can't hear you. Can you hear me? Yes, now we can. You were really inspirational, and the Thank you. project Talimabad, I really admire it. Thank you. My question is, I am a developer, app developer. Yes. But in this world of AI, I cannot decide where should I start. Prompt engineering, machine learning, Yeah. what? Yes, excellent. I think that's a really great question for everyone over here. So as a software engineer, what is my starting point into the world of AI? So for myself, I'll give you my own example here. I am not an AI engineer, right? I am, actually, आज announce भी किया था, I am Google Developer Expert for Web. I have been using web for the last 25 years. I've been building on the web platform. But today I am building on AI. So the starting point is using it, and using it well. And you will see that a lot of the use cases, जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर हम लोगों ने prompting के साथ किए हैं, right? So for everyone in this room, I think prompt engineering is the first step. Once you step into that, then you will find a lot of other areas to focus on, and usually the next one would be fine-tuning models, right? It is all non-technical in the sense that you don't need to be an AI engineer for this. आपने कोई degree नहीं करनी, इसके लिए कुछ नहीं करना. It's just a bunch of code that you're writing. So those are the things I would start off with. All right, awesome. Excuse me. All right. Last question. All right, last question. Let's do it. Assalamu alaikum. Thank you for this inspirational speech. It was a great lecture. Thank you. I have a little question that we are training our models and fine-tuning them for our context-based learning, right? Bilkul. So we sometimes have some different context, like some A context could be converting my prompt to SQL queries. Some other would be some in different domain, like in medical domain. Yes. And we are using these large models to build our shorter context-based results. How can we store them locally as a separate models? How can we use them entirely differently? I don't want to merge different models together. So that's basic question.
Because after your base foundation, जिसको basic English आ गई है, उसको basic language समझ आती है, now you're training that model for your specific use case. अगर health के अंदर है, तो उसका health का एक छोटा सा model बन जाएगा. And then you will use that. And the base does not have to be big. You don't have to take the llama 70 billion, right? Maybe 7 billion से आपका सारा काम हो जाता है. So that's where you should be looking at. You should be looking at different open source models. The smallest one, start with the smallest one, fine tune them and see the output if it's more relevant for your use case. Awesome. I think that was it from my side. Thank you all. It was really great speaking to you. DevFest.